So, very good evening to all of you. You are watching my channel Anish Sir's Technology, and I am Anish Sir with you all. So, in this lecture, we are going to discuss a very important object-oriented programming principle, that is interface. So, interface is very important and implemented in all the life projects. So, what exactly the interface we will discuss in this lecture? You must be knowing that about inheritance. When the one class inherit the property from another class, this concept is called inheritance. Unfortunately, Java and C# does not support the multiple inheritance. Multiple inheritance was what exactly the definition is. One class cannot inherit the property from more than one superclass. एक क्लास एक से ज्यादा सुपर क्लास से पैरेंट क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं कर सकता. इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस. सो विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस वी कैन इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड सम मोर फीचर्स इट प्रोवाइडेड बाय इंटरफेस. सो बिफोर एंटरिंग इनटू द टॉपिक we must have some knowledge of the related terms that I will discuss with you all. Just a moment. I'm just sharing one screen to all of you. Okay. See, I have created some notes to demonstrate this topic. Before interface, we must have the knowledge of what is class, what is abstract class, and what are the abstract functions. So very first point, a class is only the collection of concrete method or fully implemented method. What do you mean by concrete method? A method which is defined with some statement, with some body, is called concrete method. एक method जिसमें कुछ statements, कुछ programming statement लिखे हों, उसे हम लोग concrete method कहते हैं. Understand? The fully implemented method is called concrete method. तो क्लास में जितने भी मेथड्स होते हैं, they are all fully implemented. Understand? This point is clear to everyone? Okay. Now what about the second point is that abstract class is a class of the concrete method as well as the abstract method. Before that, I want to add one more line, abstract methods. So what are abstract method? A method which does not contain any statement in the body. Only declaration is there, but no statement there in the body. एक ऐसा method जो कि declare तो है, define तो है, लेकिन उसमें कोई statement, कोई प्रोग्रामेटिक स्टेटमेंट नहीं लिखा, उसको हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड. आई विल शो यू डायग्रामेटिकली, नो प्रॉब्लम. सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास उस क्लास को कहते हैं जिसमें कुछ कॉन्क्रीट मेथड एग्जिस्ट करने चाहिए apart from the abstract method. Means, in other words, we can say that abstract class are those class which is the collection of some concrete method as well as some abstract method. मतलब concrete method जो कि ऐसे method जो कि fully implemented हैं, apart from that some abstract method भी होने चाहिए. Abstract method which does not contain any statement in the body. Okay. Now slowly I am coming to our current topic, that is interface. Interface. So interface is only the collection of purely abstract method. मतलब interface एक ऐसे concept को हम लोग कहते हैं जिसमें जितने भी methods define किए जाएंगे, they all will be purely abstract. मतलब abstract method के साथ कोई भी concrete method नहीं होगा. So I think that now you are in position to understand the concept of interface. Okay. So just a moment. Class contain all the fully defined methods. It is nothing but concrete methods. Okay. What about abstract class? Contain the mixture of
concrete method as well as abstract, one second, abstract method. Understand? 2 points are clear to everyone? Okay, see. Okay, third point is that interface. In very simple language, interface is only the collection of abstract method. Means the method which does not contain any statement in the body. Okay. Finally, we have cleared these points. Now, interface in the C#. Interface are syntax-wise, syntactically similar to the abstract class, we agree, but in interface, no concrete method, the method which include a body is allowed, and all the method will be fully abstract. I think this point is clear to everyone that we have already discussed. Abhi humne yahi discuss kiya. Once an inheritance is defined, any number of classes can be implements. It can provide the body according to the requirement. It is mandatory for all the drive class to provide the implementation for all the abstract method of this class. What this point, the meaning of this point, just a moment, I'm just clearing. Suppose this is our one interface. Understand? This is the interface. I have defined one interface. Okay. इस interface को कई classes inherit करेंगे. Suppose this is class 1, this is class 2, and this is class 3. Okay, just a moment. Okay, I'm just changing the color. Okay. Class 1 and this is class B, suppose, and this is class, just a moment. One second. Actually, class A. Okay, fine. And this one is the class B, and this one is the class C. According to the identifier rules, we cannot take any variable name as a numeric. So that's why I've raised class C. Okay, C. So and you can see over here, this is a class A, class B, and class C. These are all classes are called the child classes and taking the property from the interface. So interface is the collection of concrete methods we have already just discussed. So इसमें अगर मान लीजिए, just suppose this is A1 function is there and it's abstract function, and A2 function is there, it's also abstract function. Okay, and A3 function is there, it is also an abstract function. अगर कोई क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है, तो it is the responsibility of every class to provide the body to all the abstract class. The point number 1 regarding the inheritance. अगर क्लास A इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है तो उसको A1, A2, A3 तीनों को बॉडी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी. Understand? In case अगर ये किसी को बॉडी प्रोवाइड नहीं करता तो it will be that class, that particular class will be treated as interface or abstract. Understand? So अगर ये classes हैं और ये किसी इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं तो all the abstract class would be implemented, fully implemented in these classes. This point is clear to everyone? Okay. Second very important point is that class A अपने अकॉर्डिंग इनको बॉडी दे सकता है, अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. द क्लास बी विल प्रोवाइड द बॉडी टू ABC अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड रिक्वायरमेंट. अंडरस्टैंड? सो क्लास C will provide the body to ABC according to their requirement. Hope you understand. So every class will have the different need and requirement. So according to that, they will provide the body. Okay.
This point is clear to everyone? Okay, just a moment. Each class is free to determine the detail of its own implementation. Multiple classes might have the interface in the different way. Already clear. ठीक है, हर क्लास अपने अकॉर्डिंग जो है वो इसके अंदर बॉडी प्रोवाइड करेगा. Second important point is that in an interface, methods are implicitly public. No explicit access specifier apart from that. यानी कि what I'm trying, the point is that कि जितने भी फंक्शंस आपने यहां पर बनाए हैं इंटरफेस के अंदर, ये सारे फंक्शन इंटरफेस के हैं. ये सारे फंक्शन जो इंटरफेस के हैं, दे ऑल मस्ट बी डिक्लेयर्ड इंटरनली बाय पब्लिक. ये सारे फंक्शन जो आप यहां पर लिखते हैं वो इंटरनली, आप इसको पब्लिक लिखें या ना लिखें डजंट मैटर, लेकिन जब भी कोई फंक्शन इंटरफेस के अंदर हम स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो पब्लिक ही होता है. तो इनहेरिटेंस के टाइम पर, जिस टाइम पर हम इसे बॉडी प्रोवाइड करेंगे, वहां पर इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है. ओके, इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड. जब भी हम कोई इंटरफेस अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो वी मस्ट यूज्ड विद द इंटरफेस कीवर्ड. हमें इंटरफेस कीवर्ड के साथ ही इंटरफेस को बनाना होगा. Okay, a class can implement more than one interface, specifically each interface in a comma separated list. एक क्लास एक से ज्यादा इंटरफेसेस से प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है. A class can take the property from more than one interfaces, but a class cannot take the property from more than one super classes, from more than one classes. Okay, understand? Because the C sharp, because we are discussing the topic under the C sharp programming language, and C sharp does not support multiple inheritance. Okay, the C sharp does not support the multiple inheritance in which one class can only access the property from only one class. Okay, it is the main responsibility of the child class who is inheriting the interface to provide the body to all the abstract function. I think this point we have already covered कि जितने भी functions आपने बनाए हैं interface के अंदर, सबको body देना ABC की responsibility है. Okay. Interface cannot contain the field means no data member can be defined inside the interface. Apart from the function, we cannot declare anything. Okay, like one thing, I missed this point. Interface constructor, destructors or the operator methods cannot be defined and no members can be declared as static. कोई भी member हम static declare नहीं कर सकते, और साथ ही साथ constructor, destructor का provision भी interface में नहीं implemented है. We cannot reduce the scope of the member function defined inside the interface. ये पॉइंट हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे, लेकिन थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं ये इंटरनली पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिफाइन होते हैं. तो जब हम इनको बॉडी देंगे और इनको यहां पर हम इंप्लीमेंट करेंगे, तो इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ इंप्लीमेंटेशन, वी हैव टू यूज द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक. होप यू अंडरस्टैंड. Okay. While defining the method in the interface, no need to specify public and abstract, and in the child class, override the keyword is also not required to override method in the interface. Before that, we have covered some lectures related to abstract and overriding, function overriding. You must watch that videos if you have the knowledge. That is very good. So override methods, a method which is declared in one class, and the same method if we are trying to declare in the another class, and that class is inheriting the father class. So that concept is called override method. एक क्लास में अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर है, मान लीजिए वाइट डिस्प्ले, और उस क्लास को हम किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं, वहां पर भी उसी नाम से कोई फंक्शन है, सेम नेम सेम सिग्नेचर, तो उसे हम लोग ओवरराइडिंग कहते हैं. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग. और ओवरराइड के लिए हम लोगों को ओवरराइड कीवर्ड यूज करना पड़ता था, लेकिन इंटरफेस में हमें ओवरराइड मेथड या ओवरराइड कीवर्ड का यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. An interface can inherit another interface. एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है. तो theoretical point we have almost covered. During the practical, if we see any clarification, then I will definitely discuss theoretically. So अब हम practical की तरफ move करते हैं. तो practical की तरफ move करने के लिए हमने कुछ scenarios बनाए हैं. इन scenarios के बेस पे हम लोग practical करेंगे. यहाँ पर concept सबसे important है इंटरफेस में.
कोडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो आई विल डू द लाइट कोडिंग, मैं बहुत लाइट कोडिंग रखूंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला सिनेरियो हम देखने जा रहे हैं, वन इंटरफेस वन क्लास। इट्स अ वेरी सिंपल it's a very simple scenario, it's a very simple practical. Okay, just a moment, I'm just minimizing it. Okay, see, this is the diagrammatic representation, okay, in which this is one interface, and this interface is inheriting by classes, and this a1, a2, a3, these are the three abstract functions, and these abstract functions will be implemented in ABC classes. So it is the responsibility of the class A, class B, class C to provide the body of every abstract function. For the revision point of view, I'm just telling you these things once again. I thought this screen could not share technically. So I think that this is clear to everyone. These are the classes and this is the interface. An interface is containing A2, A3, A2, A1, A2, A3. These are the abstract functions. And these abstract functions does not containing any body. You can see because they are abstract, and these abstract function will be implemented in the class A, class B, and class 3. Okay. Now we should start the practical. So for starting the practical, we have to start the Visual Studio. So where is the Visual Studio? Okay, see, Visual Studio. It is opening. Parallelly, if you want to do the practical with me, along with me, so you can also start. You can also start the Visual Studio. Okay, see. So I'm just taking the fresh project, new project. Okay, then the left hand side, the Visual C# should be selected, and in the right hand side, console program should be selected. So I'm taking the file name according to the topic, interface demo. Just I'm clicking OK. Just a moment, I'm just closing. This is the warning message, and 200 set. Hope you are able to screen now properly. Okay, see, this is the by default main class which is already created when we take a fresh project. So I have to take a one interface. So interface definition is define karna interface bahut easy hai. Just type interface, it is a keyword, and after that you can take any name, any valid name. First interface, no problem. And now we are inside the interface. Now we have to define the function. So I'm taking a function void display, open bracket, and semicolon over here. Now you can see there is no body statement in this function. Why? Because this is the abstract function. An interface only contains the abstract function. I'm repeating this line number of times. Okay. So ये एक function है जो कि मैंने define करा first interface के अंदर. Okay. अब इस इंटरफेस को हमें इनहेरिट करना है. तो इनहेरिट करने के लिए ये जो प्रोग्राम क्लास है हमारा, दिस प्रोग्राम क्लास इज ट्रीटेड एज बेस क्लास. ये क्लास इस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा. कैसे? यू हैव टू पुट द टू कोलन, यू हैव टू पुट अ कोलन. कोलन के बाद यू हैव टू जस्ट टाइप एफ. अगर आपको इस क्लास को इनहेरिटेंस की परमिशन है तो नीचे इंटेलिजेंस में आपका इंटरफेस आ जाएगा. नाउ वी गॉट द परमिशन, हमें परमिशन है. ओके, फाइन. Okay, means this interface is inherited in this class. Now what is the prime responsibility of the program class? Please tell me, what is the prime responsibility of the program class? The program class prime responsibility is to provide the body to the abstract function. So how many abstract function is there? There is single abstract function, void display. Okay, so void display. Understand? Now we have to provide the body. Okay, console.writeLine, and I'm just writing a simple statement, providing the body. Understand? That's it. Okay, now fine. So now I want to execute this function. तो ये function basically जो हमने बनाया है वो program class के अंदर बनाया है.
तो इस प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देन ओनली वी कैन एक्सेस दिस फंक्शन. ओके ओके फाइन. दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर फ्रॉम द क्लास कॉन्सेप्ट. ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास के कॉन्सेप्ट से क्लियर होगा. तो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द क्लास नेम program. Okay, and obj is equal to new and bracket. Fine. The object is created. Now we have to call the function. So obj dot display. Okay, fine. And console dot read key to hold the screen. Screen को hold करने के लिए. Okay. I am very much sure कि ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ओके लेकिन उस एरर को प्रॉब्लम को आपको समझाना था. ओके नाउ आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन ओवर हियर. सी द एरर इज कमिंग. आई एम क्लिकिंग नो. नाउ सी द वार्निंग मैसेज. द वार्निंग मैसेज इज दैट इट्स अ टेक्निकल लैंग्वेज बट आई विल एक्सप्लेन यू. जस्ट अ मोमेंट. मैग्नीफाई. आई एम ट्राइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट टू ऑल ऑफ यू. Okay, see, the program does not implement the interface member. Interface demo program display cannot be interface implement an interface the program.cs. Just a moment. See, this is the main problem. Member, because it is not public. It is not public. What exactly the meaning of this line? It is a very important line and mostly asked in the interview. I'm just closing this output screen. And again, I'm coming to the MS Word file. Now, this error actually is related to this red line. We cannot reduce the scope of the member function defining inside the interface. इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को, जैसे हमारा ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है और इसको हम बॉडी दे रहे हैं, तो ये इंटरनली जो है, अगर हम चाहे डिफाइन करें या ना करें, ये पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ डिफाइन होता है. तो जब हम इसको बॉडी प्रोवाइड करेंगे देन वी हैव टू मेंशन द पब्लिक कीवर्ड. अदरवाइज अगर हम पब्लिक नहीं लिखते हैं तो इट विल बी ट्रीटेड एज प्राइवेट. तो पब्लिक फंक्शन कैन नॉट बी ओवरराइड और कैन नॉट बी री-इम्प्लीमेंटेड विथ प्राइवेट. पब्लिक फंक्शन को अगर आपको ओवरराइड करना है, बॉडी देना है, तो पब्लिक ही लिखना पड़ेगा, प्राइवेट से हम नहीं दे सकते. अगर हम प्राइवेट से देंगे दैट मींस वी आर रिड्यूसिंग द स्कोप. And in the inheritance, we cannot reduce the scope. Okay, so public we have to mention. That's it. Now I don't think any problem is there. Okay, don't worry about this warning, it will be resolved. Just a moment, I'm just checking. Okay, fine. So I'm just starting. Okay, see providing the body, PROVIDING, providing the body. That means your first scenario is completed. Don't worry about the code which I have written inside the function. That can be increased or decreased. My main focus is that to implement the inheritance concept, interface concept. So I'm just closing this. Okay, the first scenario is over. Now we can implement the multiple interfaces. Okay, see how. Interface, second interface. Okay, एक और इंटरफेस हमने ले लिया. एक और इंटरफेस के अंदर हमने एक और फंक्शन, तो इसको हम डिस्प्ले 1 कर देते हैं और इसको हम डिस्प्ले 2 कर देते हैं. नो प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड? नो प्रॉब्लम. दिस इंटरफेस इज डिफाइंड विद द डिस्प्ले 1 एंड दिस इंटरफेस इज डिफाइंड विद द डिस्प्ले 2. क्लियर? दिस नेम इज चेंज, दिस नेम इज चेंज, क्योंकि ये दोनों इंटरफेस एक क्लास के अंदर इनहेरिट हो रहे हैं. ओके, तो हमने इन दोनों के नाम डिफरेंट कर लिए फिलहाल अभी. बाद में आफ्टर सम टाइम आई विल शो एन एग्जांपल टू टेक अ सेम नेम. ओके, बट लिटिल बिट लेटर. जस्ट अ मोमेंट. सो अभी हमारे पास दो इंटरफेस हैं. अंडरस्टैंड? दिस इज फर्स्ट इंटरफेस एंड दिस इज सेकंड इंटरफेस. ओके, ये हमारा फर्स्ट इंटरफेस है और ये हमारा सेकंड इंटरफेस है. अब इन दोनों को हमें यहां पर इनहेरिट करना है. तो इनहेरिट करने के लिए चाहे जितने भी इंटरफेसेस हों, all the interfaces can be inherited in a class. How? We have to use the comma separation. Just a moment, I'm just clearing the drawing. ठीक है, इंटरफेस कॉमा.
सेकेंड इंटरफेस। सो इंटरफेस 1 और सेकेंड इंटरफेस दोनों इनहेरिट हो गए। ओके, नो प्रॉब्लम। अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। विल दिस प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट और नॉट? क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? इट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सी, आई एम जस्ट trying to run this program. No, error is coming. What error is coming? Okay, I will explain you. हमने इस क्लास के अंदर दो इंटरफेसेस को इनहेरिट करा है, जिसका नाम है इंटरफेस फर्स्ट इंटरफेस एंड सेकंड इंटरफेस, एंड बोथ द इंटरफेसेस हैविंग वन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। हम इस क्लास के अंदर एक तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को बॉडी नहीं दे रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द बॉडी ऑफ डिस्प्ले एंड डिस्प्ले इज नॉट एग्जिस्टिंग इन एनी इंटरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द डिस्प्ले वन ओवर हियर, okay, and I am just providing the body to first interface method. Understand? And I am just using here, I'm just erasing this line, 1 second. Okay, तो हमने एक मेथड को बॉडी दे दी जो मेथड फर्स्ट इंटरफेस के अंदर डिफाइन था, बट सेकेंड इंटरफेस भी इसके अंदर इनहेरिट हो रहा है, तो इस एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को भी हमें बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. We have to supply or provide the body. So still we have not provided the body. So how to provide the body? Simple. Public void display2 and console.writeLine, providing the body to second interface method. Now, according to me, I have done and I have implemented all the important protocols. The protocol is that we have to provide the body and we are providing the body. The display1 and display2 is done. Okay, now only we have to call, you know that function तब तक execute नहीं होता जब तक हम उसे call ना करें. तो why, how to call? obj. Obj is the object we have already created of the class program. और प्रोग्राम के अंदर ही दोनों फंक्शंस इंप्लीमेंटेड हैं, तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड obj डॉट display1 no problem and obj dot display2 no problem. Okay, fine. So now the program should executed. The output is coming, providing the body to the first interface method, providing the body to the second interface method. So our second scenario is successfully completed. Okay, fine. So how to implement the multiple inheritance? Just comma and another comma. Okay, now I'm taking the third scenario. हम इस क्लास के अंदर क्लासेस और इंटरफेस दोनों को इनहेरिट करेंगे. Means this class should be implement one class and the multiple interfaces. ठीक. The point to be very important is that इस क्लास का नाम है प्रोग्राम. हम चाहते हैं कि इस क्लास के अंदर हम एक क्लास इनहेरिट करें और कुछ इंटरफेसेस को इनहेरिट करें. तो हम इंटरफेसेस को इनहेरिट करके तो देख चुके, हम एक क्लास को भी इनहेरिट करना चाहते हैं. द वन थिंग यू हैव टू कीप इन द माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर हम इनहेरिटेंस क्लास के साथ कर रहे हैं तो वी हैव ओनली वन परमिशन टू इनहेरिट ओनली अ सिंगल क्लास. हम एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकते. वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओनली वन क्लास वी कैन इनहेरिट and there is no limitation of the interfaces हम जितने चाहें उतने inherit कर लें, but only we can inherit a single class. This point is clear to everyone? Okay, first point. Second point is that just a moment. Okay, so point number one, while inheritance, only one class can inherit, and
but multiple interfaces can be inherent. Understand? This is our point number one. Second point, if we are inheriting class and interface together, then we have to follow some preference rule. What are the preference rule? Class should be first, then interface we can use. I will clear this point practically. Don't worry. Okay, just keep these points in mind. Okay, so I'm just taking a fresh example. So I'm just erasing these two interfaces. Okay, and I'm also erasing this line. Okay, and I'm also erasing this implementation details. Okay, I'm also erasing this calling statements. Okay, that's a fresh screen, fresh program. Okay, जैसा हम start करते हैं, जब हम नया project start करते हैं तो बिल्कुल उस type का हो गया. Okay, so class circle. Okay, int r radius. Public void input. This is the input function inside a class circle. Enter radius. Understand? And r is equal to int dot parse and console dot read line. Okay, fine. So input, I have just taken radius from the user. User से हमने radius input कराया. Public void. Just a moment. Input radius and public void area. सर्कल का एरिया हमें कैलकुलेट करना है. डबल सर्कल एरिया. Circle area is equal to pi r square, so 3.14 into r into r. R is a stance variable. It can be directly used over here. Just a moment. I'm printing area of circle and circle area. Understand? So I have defined one class which is accepting radius and calculating the area of circle. That's it. Now I'm going to define interface. Interface first interface. In this, I have taken process one. This is a parameterized function which is accepting two parameters. Okay. Process one function is defined. No, sorry, we cannot provide the body. Okay, so my mistake. I just put it comma over here. Okay, so it's abstract function. We cannot provide the body. Okay, so it's abstract function. Now, interface. Second interface. I have defined one PROCS process 2 int a comma int b. Understand? These two abstract functions are defined in the two different interfaces. Now, what are the super interfaces and classes? One class is there, okay, and two interfaces are ready to implement. अब हम यहाँ पर, okay, I'm trying to write interface first interface comma second interface. जैसा हमने previous example में लिखा था वैसा ही हमने लिख दिया. Understand? Expected first interface comma second interface. I don't think
what errors coming. Okay, expected. Okay, one second, it's my mistake. I have to put a colon over here. Just a minute. If you are a programmer, then you have to ready all the time for any kind of error. First interface, comma, second interface, not fine. Okay, but we have to implement class also. तो क्लास क्या हम यहां पर लिख सकते हैं इस तरह से, कॉमा कॉमा, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास, सर्किल, नॉट अलाउड. द ब्लैक कलर इज शोइंग नॉट अलाउड. जैसे ही आप इसको रन कराएंगे इट विल शो दैट. तो माय पॉइंट इज दैट if we are inheriting the class and interface together, then we have to follow some preference rule. The class should be first, then interface we can use. यानी कि अगर आप क्लास और इंटरफेस दोनों को एक साथ इनहेरिट कर रहे हैं तो पहले आपको क्लास को प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको इंटरफेसेस को. तो जस्ट cut this and you have to write here control V with the comma and you have to remove the last comma. Understand? That's perfectly okay. क्लास को हमने पहले प्रेफरेंस दे दी, उसके बाद हम इंटरफेस को प्रेफरेंस दे रहे हैं. नाउ वी आर फॉलोइंग द रूल्स. Okay, this is a major protocol. And after that, now I have to execute. So first of all, we have to provide the body. So body के लिए two abstract functions are there. This is one, just a moment, process 1 and process 2. Okay, so one by one we have to provide the body. The public void process 1 and it is a parameterized a comma int b. Understand? So simply sum plus a plus b, इन दोनों पैरामीटर्स का हम सम कर लेते हैं और इसके बाद आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग body a comma int b. No problem is there. Okay, console dot write line product a multiply b. No problem, no issues. Okay, so body हमने दोनों को प्रोवाइड कर दी. क्लास की बॉडी ऑलरेडी वहां पे थी. Now only the calling procedure is pending. So how to call? It's very simple. obj dot इनपुट, सबसे पहले हम इनपुट कॉल कर रहे हैं. ये इनपुट फंक्शन आपका जो है वो क्लास सर्किल के अंदर डिफाइन है और क्लास सर्किल आपका प्रोग्राम के अंदर इनहेरिटेड है. तो हम इस फंक्शन को इजीली कॉल कर पा रहे हैं. ये फंक्शन हम इजीली कॉल कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ विच ऑब्जेक्ट? प्रोग्राम ऑब्जेक्ट. दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोग्राम क्लास. अंडरस्टैंड? अब इनपुट के बाद वी हैव टू कॉल the second function is that area. Understand? So both the function is perfectly called. Now we have to call the process 1 and process 2. No problem. obj1 obj dot process 1. So process 1 is a parameterized function, so we have to pass the parameter. So I'm passing 2,4. Okay, no problem. By the input we can also pass, but here the programming is not important, concept is important. So 10,20. No problem. Okay, I think that there is no error according to me. I've checked all the points perfectly. Okay, so I'm trying to execute this program. All right. See, it is asking for the radius. Okay, because the first function which is defined in the circle class is the input function, and that input function is asking the radius. So I've given the radius 4. The area is there. You can see the area calculation is there. And after that, the sum 6 and product 200. Okay, this output is coming. Okay, so I think that it is sufficient for this lecture. And we can do some things. Fine.
Okay, so you do the practice on the scenarios and subscribe my channel so you will be stay connected with the next upcoming videos. Okay, fine. So this is sufficient for this lecture, and I'm sure you must have you are in better picture to understand the concept of interface. Okay, so I'm just closing.